Welcome back here in Adelaide and welcome back to our channel. to another video of Happy Zindagi holidays. Down Under Vlogs, episode 2. Alright guys, so we've decided to just explore this. There's a maze here for winery. Winery की कोई maze है, ऐसा बताया गया. You just go in there, गुम हो जो, खा पी लो. I don't know what खा पी लो. It's just like अंगूर जेड़े लगे हो तोड़ तोड़ के खा लो. So You can't kiss lightning, you can't hush thunder. You can't hold back a stubborn storm like this, but she can. If she can love a guy like me. guys, let's try something from here. It's sweet like a sugar. Without a doubt, I can say this was the most khatta angoor I've ever had in my life. I'm sure like people are allowed to roam here freely because अभी जो अंगूर हैं वो छोटे हैं. नहीं उन्होंने पता भी जे बंदे अलाउ करते हैं उन्होंने पट के ले जाएंगे लिफाफे भर के. Okay, so we are about to head into this maze. They've charged us like $5 per person. हुन देखिए भी बाकी it's worth. So the significance of this, like it says, like planted in 1990 using Cupressus. ना ही बोलिए तो बढ़िया. Looks like आप सबने हैरी पॉटर तो देखी होगी. हैरी पॉटर, I guess it was the Harry Potter and the Goblet of Fire maybe. So it's similar to that, like looks like जैसे बचपन वापस आ गया हो. So never been into the maze before, but yeah, that Harry Potter वाली feeling आ रही है यहाँ पे जैसे उस मूवी में था. So ये है भी, thank God कि हमारे पीछे वो दम पिशाच नहीं पड़े हुए the way Harry Potter में थे. So yeah, it's pretty amazing, pretty amazing. Monica अपना पूरा ग्रुप फील ले रहा है कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में गुम होना चाहिए था, बट nobody got lost. So it was that complicated कि आप एक तरफ से बढ़े दूसरे तरफ से बाहर निकल गए. And just to give it a feel, so what we did, we started shouting, एक दूसरे के नाम लेने लगे हम. So just to make ourselves believe कि वाकई हम गुम हो गए कि नहीं भाई. भाई गुम ही नहीं हो रहा है यार यहाँ तो. गुम होना चाहिए. मेन तो बात वो है गुम हो जाओ. किससे? अपनी वाइफ से गुम हो जाओ यहाँ पे. बदला ले लेते. Okay guys, so that's pretty much it. Way out. So maze was not like a maze. So maze was more of 4-5 ਵੱਡੀਆਂ ਬਾੜਾਂ ਤੇ ਬਾੜਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ. हो गया आयुष $5 वसूल. मैं ना मैक्सवेल को एक लेटर लिखने लगा हूँ. केड़ी है इस मेज के रिगार्डिंग. डियर मैक्सवेल, हथू है तेरे पे. 5 रुपए की चीज के हमसे $5 ले लिया तूने, बताओ. So guys, after the intense session of walking in the heat and exploring wineries, we thought of coming to this beautiful place, a brewery where the regional beer is made, and they've got like pretty good stuff on the menu. So we thought like it's a perfect day, Boxing Day, test match. Let's sit back, enjoy, and after that we'll just go out. तो सामने आप देख रहे हैं winery. So we are in state of food coma at the moment. तो काफ़ी खाना खाने के बाद अब आलस आ रहा है कहीं घूमने का. नॉट श्योर वे टू गो, बट सानू रोटी चढ़ गई है. शराब नहीं चढ़ी, सानू रोटी चढ़ गई. You can't kiss lightning, you can't hush thunder. You can't hold back a stubborn storm like this, but she can. If she can love a guy like me, that girl can do about anything. 'Cause Lord knows I've got brace to fix, but that ain't back to down. Majority of cities आप कह लो कि ऑस्ट्रेलिया में they are coastal, like famous cities like Adelaide, Brisbane, Gold Coast, Melbourne, Sydney, Perth and Darwin. So all are located near to the कह लो ocean. So we are down south, and that's Adelaide, or the connecting suburbs over there.
The view is it's pretty good, pretty relaxing, and I guess like यहाँ पे you have option for trekking, and there's one cycle track on the other side as well. Mount Lofty यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है according to sources that it's a threatened place for bushfires. Australia में bushfires it's a very major thing. So last year we have devastating bushfires. Many times like bushfire हुई है यहाँ पे, and it continues to threaten this valley, we will say, due to large amount of thickness of natural vegetation जो कि आप देख रहे हैं present along the slopes. So तब करके इन्होंने टावर बनाया which is approximately 34 meters just so that ऊपर कोई हो and they can just have a view, they have a clear vision in case if there is any sort of अगर यहाँ पे bushfire हो रही है, and they can let the authorities know and they can react on time. And this is the area where there was a fire last year when there was a bushfire. So guys, this is that area what has been marked here. So where the bushfires struck last year very badly. Kangaroo Island. It's approximately कह लो कि नाना करते हुए Adelaide से it's around 100 to 150 kilometers. And then what you have to do, you have to take the ferry to reach the actual island. हमारे पास time कम है, so I don't think so it's a feasible option for us to go there. The frequency of the ferries are not that frequent. अगर आप सुबह ferry पकड़ रहे हो, and there's a return ferry in the evening, so I don't think so we will be able to go there. Shania. Girl can do about anything, 'cause Lord knows I've got breaks to fix, but that ain't backed her down an inch. She's my lost heart saving grace. Okay, so here we are, Henley Beach, South Australia, Adelaide. It looks pretty good कि लोग मतलब how they actually enjoy the summer, tent लगा के they sit on the beaches and just take sun bath and just come over for a picnic. I believe like this is one of the best thing you can do if it's a sunny weather and हवा ना चल रही हो, हवा चल भी हो regardless, but this is absolutely beautiful and something which I really prefer. हाँ जी, कदों चल रहे हैं ਆਪਾਂ ਫਿਰ? चलो ਹੁਣ ਨਹੀਂ अच्छा बीच ਤੇ ਇਹ ਜਗਾੜ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਆ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਾਂਗੇ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੁਣ ਤਾਂ मतलब अपने बंदे पजामे चक के घूम रहे हैं, बाकी ऐसे ही घूम रहे हैं निकरे लोगों ने बताया नहीं, वरना हम लोग अपने बिकिनीज लाते हैं यहाँ पे एंड बिकिनी शूट भी कर लेते हैं ना। अब हमारी बिकिनी शॉपिंग का पूरा बैग पड़ा हुआ है, पर तुमने बोला ही नहीं आप बीच में, वरना बीच के हिसाब से तैयार होके आते हैं। यार पता नहीं जनानियां ने पर्स कादे वास्ते ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ। You are extra special. एक्स्ट्रा स्पेशल। It's very beautiful beach. वाटर जो है बड़ा ही क्लियर है यहाँ पे, और सैंड बड़ी अच्छी है, बिल्कुल भी डर्टी नहीं है। और देखो कितना फन कर रहे हैं बच्चे, बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हेलो। What happens here, like अगर आप बीच पे गए हैं, so obviously you're gonna get like मिट्टी लगेगी काफ़ी, and they've made provisions so once you come out of the beach, so you have this tiny little small point where you can just wash your feet अगर आप नहाना चाहते हो, because beach water is always salty and there are chances that you might get like itchiness just because of it. So they've made provisions to take showers just outside the premises of this beach. Like ये हर जगह है, like even if I guess like if you go into any beach, so it will always be there. Okay जी, after this hectic day, now we're heading back to the hotel. देखिए, so we've got some plans to go to there's this bar next to our hotel where we are staying, so we've got plans to go there and see क्या vibe है Adelaide की, मतलब the crowd of Melbourne like it, वहाँ पे जाके पता लगेगा, अभी कुछ कह नहीं सकते। But it has been a tiring day. We've covered a lot of places. Now let's see what we have in the box for us tomorrow, because we are heading back Monday. वैसे ना one thing is for sure कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हों का सुपना है बीच साइड घर होए, सामने बीच ते वो बालकनी वाला घर होए। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਗਿਫਟ ਕਰੋ, ਲੋਟਰੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗੇਗਾ ਸਹੀ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੜੋਸੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। Hey!
एक्टिंग करनी है ये हो गया She can cool me off quicker than a rainfall. She can read